Hello everyone, so I hope you all are doing well. So today I'm here with a soup recipe. I'm trying to include some soup recipes in my diet on a daily basis, जो कि daily हो नहीं पा रहा है, but then also I'm trying कि मैं daily add कर सकूँ. So for that I have come across many quick soup recipes जिसमें कि minimum ingredients require हो और जल्दी भी बन जाए. So मैंने एक soup try किया है जो कि ये tasty भी है और जल्दी भी बन जाता है. So I thought कि मैं आपके साथ भी वो share करूँ so that you can also try this. It is a very quick process and requires a very minimal ingredients to be prepared. So let's quickly move on to the recipe. चलिए. So for this we need spinach, chopped carrot, garlic cloves, one green chili, it is optional, tomato and some coriander along with the stem. Now in a pan I am taking 1 cup of water. So now I have added chopped carrot, garlic, green chilies which is optional. आप चाहो तो green chilies totally skip कर सकते हो, and tomatoes, and let it boil for approx 10 to 15 minutes. वाटर की क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से जितना भी आप सूप बनाना चाहते हो. एंड ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट. मैंने इसमें थोड़े से गरम मसाले भी ऐड किए हैं एज इट इज़ वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म एंड इम्प्रूव्स डाइजेशन, तो इसलिए मैंने इसे सूप में इंक्लूड किया है. आई हैव टेकन दालचीनी स्टिक्स, cloves and some black pepper. So now simply let it boil for 10 to 15 minutes. So now when it is cooked about 50 to 60%, then we will add the spinach and coriander leaves along with the stem into the boiling water. Now just boil it for another 5 minutes. And then we will make a smooth paste out of this, and I'm not going to strain this out. मैं उसे एज एन फाइबर कंटेंट में ही रखूँगी और देन उसमें थोड़ा सा पानी डालकर एडजस्ट कर लेंगे कंसिस्टेंसी को. नाउ जस्ट सर्व दिस हॉट एंड टेस्टी सूप. और इसमें थोड़ा सा गार्निश करना तो बनता है, सो आई एम जस्ट स्प्रिंकलिंग सम चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स एंड या नाउ इट्स रेडी. सो बिलीव मी, दिस इज़ रियली टेस्टी and very quickly made. So please give it a try, and if you like the video, please do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll be back with more such videos. Thank you.